A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain the third stanza poem Prayer written by J.M. Mahjoor. The liners of this poem, or we can say the texts of this poem are as: like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. In form I am a man, in substance far away from humanity. Subject me not to trials, shame not my human form. Forsaken by man I, and so they call me Mahjoor. People may desert thus, but you don't abandon me, Lord. These are the lines from the poem Prayer written by J.M. Mahjoor. In this line, the poet wants to say that he compares himself with dew, like drops of the dew keep lying in the grass till the first ray of the sun come and give them the power to rise up. Similarly, the poet compares himself with the dew, and he wants that, like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? शायर यहाँ अपने आप को शबनम से तशबीह देता है, जिस तरह से शबनम के कतरों को घास के ऊपर पड़े रहना पड़ता है कि जब तक कि उस पे सूरज की पहली किरणें नहीं आती और उन्हें ऊपर उठने की सलाहियत और ताकत नहीं अता करते। तो वैसे ही शायर हमें ये बता रहे हैं कि मैं इस तरह ड्यू की तरह मतलब जिस तरह से ड्यू ग्रास पे पड़ी रहती है उस तरह से मैं मतलब जो सन है उसकी पहली किरण का इंतज़ार नहीं करूँगा, बट अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ सन। वो चाहता है कि इसी तरह मतलब शायर चाहता है कि वो अभी तक अब वो सुबह सवेरे की पहली आहट के साथ फूलों की तरह जाग उठना चाहता है। अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द डॉन, मुझे उस तरह से जगा दो, मैं उस तरह से रहना चाहता हूँ जिस तरह से जो फूल जब सुबह की हल्की सी हवा, डॉन डॉन मीन्स कि जब सुबह सवेरे में जब थोड़ी थोड़ी सी लाइट होती है कि रात ख़त्म होने के बाद जब सुबह होता है तो पहले थोड़ी सी रोशनी होती है, दैट मीन्स डॉन। तो शायर चाहता है कि पोएट चाहता है कि अवेकन मी विद द फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द सन, मुझे फूलों की तरह जिस तरह से फूल सुबह सवेरे सुबह की पहली रोशनी से जाग उठते हैं उसी तरह से मुझे भी जगा दो। The poet wants God to fill him with the power to rise. He says that he has been like dew so far. Now he wants to awaken like flowers at the first stroke of the dawn. Then in the next line, the poet says that in form I am a man, but in substance far away from humanity. यहाँ पे शायर वो कहना चाहते हैं, हमें ये कहना चाहते हैं J.M. Mahjoor, in form I am a मैन। वो कहते हैं कि अगर मैं ये कि शक्ल, अगर हम मेरी शक्ल की तरफ देखा जाए कि सूरत से मैं, तो वो कहता है कि अब तक वो सिर्फ सूरत के लिहाज से ही एक ह्यूमन है, एक इंसान है, एक आदमी रहा है, बट फार अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी, बट कि वो जो इंसानियत है इसकी खसलत है, आदमी का जो असली वजूद है उसकी इंसानियत से होता है। सो वो यहाँ कहता है कि इन फॉर्म, शक्ल सूरत से मैं तो ह्यूमन लगता हूँ, इंसान लग रहा हूँ, बट फार अवे फ्रॉम ह्यूमैनिटी, इंसानियत से मैं बहुत कोसों दूर हूँ। सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल, शैम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म। फिर शायर खुदा से इल्तिजा करता है कि वो इसका इम्तिहान ना ले, वो चाहता है कि खुदा उसकी इंसानी शक्ल को शर्मिंदा
نہ کرے. سبجیکٹ مین ناٹ ٹو ٹرائلز. ٹرائلز مینز امتحان. شیم ناٹ مائی ہیومن فارم. وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میری جو انسانیت ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی انسانی شکل جو ہے اس کو شرمندہ نہ کرے. Forsaken by men I, and so they call me مہجور. شاعر پھر اس لائن میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شاعر یہاں پہ forsaken by men, forsaken by men I. forsaken means چھوڑا گیا. لوگوں نے اگر مجھے چھوڑ بھی دیا, and so they call me مہجور, کیونکہ میں abandoned ہوں. forsaken means چھوڑا ہوا. so they call me مہجور, اسی لیے وہ مجھے مہجور کہتے ہیں. مہجور means چھوڑا ہوا. مہجور means چھوڑا ہوا. اسی لیے لوگ مجھے مہجور کہتے ہیں کیونکہ میں forsaken ہوں. forsaken by men, کیونکہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو اسی لیے مجھے لوگ مہجور کہتے ہیں. مہجور means چھوڑا ہوا. people may desert thus but you don't abandon me Lord. اگر لوگ مجھے چھوڑ بھی دیں, desert means ساتھ چھوڑنا. people may desert, لوگ اگر میرا ساتھ بھی چھوڑ دیں, thus but you don't abandon me Lord, آپ میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. abandon means چھوڑنا. abandon me چھوڑنا. یہاں پہ اس لاسٹ لائن میں وہ پوئٹ مہجور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر مجھے سارے لوگوں نے بھی چھوڑ بھی دیا ہے, اکیلا مجھے, اس لیے وہ مجھے مہجور کہتے ہیں کیونکہ میں abandoned ہوں, forsaken ہوں. بٹ اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا پر آپ مجھے abandon نہیں کرنا, نہیں چھوڑنا, آپ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, دس دا پوئم written by J. Major and translated into English. تو اس کی جو ایکچول رائٹنگ ہے, ایکچول جو اوریجن ہے وہ اس میں اس کا کشمیری تھا, جو دعا سبوں کو آلموسٹ یاد ہوگی, وہ ہے صاحب و سچم میں چینی وسم اصل چھاپتم. So dear students, you should recall the poem prayer in Kashmiri, and you will be helpful with the reciting or memorizing that in Kashmiri language. Thanks. Allah Hafiz.